हेलो गाइस, मैं हूं वर्जिस और आप देख रहे हैं गेमिंग जगवार। मैं हाजिर हूं हमारी असैसिन क्रीड रिवलेशंस की नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोग जब वापस पहुंचे तो हमें यूसुफ की मौत की खबर मिली। खबर क्या मिली, हम खुद गए थे और उसको देखा, उसकी बॉडी को। उसके बाद हम लोगों ने उसकी कमर से वो खंजर निकाला और हम लोगों ने उसका बदला लेने के लिए पहुंचे आर्सेनल, जहां पर अहमद मौजूद था अपने बिजंतीन गार्ड्स के साथ। वहां पे तो क्या फिर तबाहियां मची। असैसिन्स आते गए और एक बारी बारी करके सारे सोल्जर्स को हटाते गए। एजियो का पाथ बनता गया। एजियो पहुंचता है अहमद के पास और अहमद उससे वही डील करता है कि तुम अगर सोफिया को जिंदा चाहते हो तो मुझे कीज दे दो और सोफिया को बचा लो। खैर, हम लोग कीज लेकर पहुंचते हैं गलाटा टावर और वहां पे भी वो हमारे साथ धोखा कर देता है। वहां पे वो एक डिकॉय को हमारे हवाले कर देता है, जबकि सोफिया को एक और जगह पर वो फांसी दे रहे होते हैं। हम लोग वहीं से पैराशूट यूज करके उसको बचाते हैं और उसके बाद हम लोग दोबारा अहमद के पीछे चले जाते हैं। उसको रोक तो लेते हैं, लेकिन उसी वक्त वहां पर अहमद का भाई आ जाता है। तो वो उसको भाई बख्शता नहीं है, वो उसको फेंक देता है ऊपर से नीचे, क्या कहते हैं, खाई के अंदर। और उसी के साथ अहमद अपने अंजाम को पहुंचता है और एजियो जो होता है वो कीज लेकर और सोफिया को लेकर वापस आ जाता है। आखिर आखिर आकर क्लाउडियो को खत लिखता है और बताता है कि अब हम लोग अगले दिन जाएंगे वापस मास्याफ। वहां पर जाकर हम लोग उस लाइब्रेरी को ओपन करेंगे और देखेंगे कि अंदर क्या मौजूद है। तो बगैर किसी देर के दोस्तों शुरू करते हैं आज के एपिसोड। ओके, तो दोस्तों अभी भी हम लोग उसी जगह पर हैं जहां पर हमने कल खत्म किया था। ओ या Began thousands of years ago, but here it was reborn. जी हाँ, जब अल्तायर ने उसे ठीक किया था। Altair ibn Ahad. He built us up, then set us free. He saw the folly of keeping a castle like this. It had become a symbol of arrogance and a beacon for all our enemies. And the सारे कहते हैं ये जगह है। hoods? Was that his idea as well? You mentioned the creed before. What is it? Nothing is true. Everything is permitted. That is rather cynical. It Oh, would yeah? be if it were doctrine, but it is merely an observation of the nature of reality. To say that nothing is true is to realize that the foundations of society are fragile, and that we must be the shepherds of our own civilization. To say that everything is permitted is to understand that we are the architects of our actions, and that we must live with their consequences, whether glorious or tragic. Do you regret your So, yeah. decision to live as an assassin for so long? I do not remember making that decision. This life, it chose me. सही बात है। वो हालात ही ऐसे थे कि एजियो असैसिन बन गया। For 3 decades, I have served the memory of my father and my brothers, and fought for those who have suffered the pain of injustice. I do not regret those years, but it is time to live for myself, and let them go. To let go of all of this. Then let go. सही। You will not fall far. ठीक है, तो अब हम लोगों ने इस यहाँ से इसे खोलना है, इस दरवाजे को। The end of the road. What do you hope to find behind that door? Okay. Knowledge, above all else. Altair was a Oh, profound bhai, bahut hi man zyada and hai. a prolific writer. He built this place as a repository for all his wisdom. He saw many things in his life and learned many secrets, both troubling and strange. Knowledge that would drive lesser men to despair. Does that worry you? Sofia, you should know by now that I am not a lesser man. Ezio. ईगल सेंस यूज करनी थी। हाँ भाई, अब समझ आ गई। मैं कहूँ पिछली दफा भी हमने ईगल सेंसेस यूज की थी, तब जाके सही हुआ था। ठीक है, तो इसको इधर लगाएंगे, ये इधर लगेगा। ओए हाँ, इसको सीधा कर देते हैं। ये चीज खुल गया।
You had better come out of there alive. I I will. plan to. ठीक है दोस्तों, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अल्ताइर की लाइब्रेरी है यार। ओ भाई अंधेरा ही अंधेरा है, थोड़ी रोशनी की जाए। ओके चेयर। No books. No wisdom. हाँ भाई, फिर क्या है यहाँ Just you, पर? fratello mio. अल्ताइर खुद? Requiescat in pace, Altair. ठीक है, एक और की लास्ट। ब्लेड्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है यहीं पे ही। It's time for the last memory. You have seen to my books. Yes. Some we sent with the Polos. The rest will go with me to Alexandria. Good. ठीक है। Very good. Father, I do not understand. Why did you build a library if you did not intend to keep your books? You should go. When the Mongols return, Masyaf must be empty. I see. ठीक है। This is not a library at all. It is a vault. It must stay hidden, Darim. Far from eager hands. At least until it has passed on the secret it contains. What Okay. secret? Go, son. Go be with your family. And live well. All that is good in me began with you, Father. Okay. This is the first time we have seen Altair without the hood. ये एक वाहिद मेमोरी है जहाँ पर अल्ताइर बगैर हुड के होता है, वरना जब भी हमने देखा अल्ताइर ने अपना हुड लिया हुआ होता है। तो बेसिकली ये लाइब्रेरी नहीं है, एक वॉल्ट थी जहाँ पर उसने वो एप्पल जो था उसे रखा था। In much wisdom is much grief, and he that increaseth knowledge increaseth sorrow. Okay. What does it tell you? What do you see? Strange visions and messages of ones who came before, of their rise and their fall. ठीक है। But what happens to us, Altair? To our family? What does the apple say? Who were the ones who came before? What brought them here? How long ago? हाँ, ये सवाल उसके दिमाग में पैदा हुए थे जब उसने उसको एप्पल को स्टडी किया था। This is my duty, Maria. ठीक है। If you are asked, say I sent the apple away. Tell them I sent it to Cyprus or Cipango, or that I dropped it into the sea. Tell them anything to keep men away from this place. This apple must not be found. Not until the time is right. ठीक है, तो अब बैठकर रेस्ट करना है। तो उसने एप्पल वहां रख दिया था और खुद यहाँ पर आकर बैठ गया, और वो जो लास्ट की थी उसमें वो मेमोरी रिकॉर्ड करने लग गया। वो भाई अच्छी खासी एज हो गई है, नजर नहीं आ रहा, अंधेरा है क्योंकि ठीक है।
लास्ट मेमोरी रिकॉर्ड करने के बाद वो चल बसा। चेक करो यहाँ पे एजियो अपने वो सिर्फ उन्हीं कपड़ों में है जिसमें वो पहली दफा आता है, फर्स्ट टाइम जब वो मासियाफ पहुंचता है। अब दोबारा से वो आ गए, लेकिन कटसीन में तो वही था सूट। तो अब हम लोगों ने एप्पल के पास जाना है। ये पड़ा वो एप्पल। Another artifact. एक और। No. You will stay here. दोबारा से पुराने कपड़े। I have seen enough for one life. ठीक है। What the hell? अभी तो इसने टच भी नहीं किया। He's talking to me? I heard your name once before, Desmond. A long time ago. And now it lingers in my mind, like an image from an old dream. Okay. I do not know where you are, or by what means you can hear me. But I know you are listening. Uh-huh. अपने ब्लेड्स, उसकी स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड भी वही है जो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे आता है तो वो यूज करता है। I have lived my life as best I could, not knowing its purpose, but drawn forward like a moth to a distant moon. And here at last, I discover a strange truth. That I am only a conduit for a message that eludes my understanding. Who Okay. are we, who have been so blessed to share our stories like this? To speak across centuries? Maybe you will answer all the questions I have asked. Maybe you will be the one to make all this suffering worth something in the end. Now, listen. डेस्परेट नजर भी आ गया। यहाँ पर जितनी भी चीजें एजियो ने उतारी हैं, उसके जो हिडन ब्लेड्स थे और बाकी सब कुछ, वो सारा का सारा वो फर्स्ट टाइम जब आता है वही था। Can you see me? ये अंकल कौन है? Ah, there you are. Good. Okay. A strange place, this nexus of time. I am not used to the calculations. That has always been Minerva's domain. Okay. I see you still have many questions. Who were we? What became of us? What do we desire of you? You will have your answers. Only listen, and I will tell you how. Okay. Both before the end and after, we sought to save the world. We built vaults within which to work, each dedicated to a different method of salvation. ठीक है। They were placed underground to avoid the war which raged above, and also as a precaution should we fail in our efforts. Each vault's knowledge was transmitted to a single place. Okay. It was our duty, mine, Minerva's, and Juno's, to sort and sample all that was collected. We chose those solutions which held the most promise and devoted ourselves to testing their merits. ठीक है। 6 we tried in succession, each more encouraging than the last, but none worked. And then the world ended. Okay. सूरज। सोलर फ्लेयर।
उसकी वजह से एकदम तबाही मच गई। ओह शिट। ओ तेरी खैर, पूरी सिविलाइजेशन बर्बाद हो रही है। यानी अच्छी खासी एडवांस चीजें थी, देख रहे हो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वगैरह है, और आर्टिफैक्ट्स भी देख लो यार। ओ भाई इतने लोग मर गए। शिट। The earth shook for days, the fires burned for weeks, and when the ash had settled, less than 10,000 of your kind still lived, and far अच्छा। fewer of ours. But we carried on, together, to rebuild, to renew. Listen, you must go there, to the place where we labored and lost. Take my words, pass them from your head into your hands. That is how you will open the way. Okay. But be warned, much still remains in flux, and I do not know how things will end, either in my time or yours. ठीक है। Wait, look, his vitals are stabilizing. Something's happening. He's moving. उठ गया। Desmond, can you hear me? Son? डेस्मंड का बाप। ओ तेरी खैर, एप्पल से रिएक्ट कर रहा है ये। I know what we need to do. अच्छा। ओके। सो वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए, और इसी तरह दोस्तों इसका एंड होता है। खैर, एक और बात यहाँ मैं मेंशन करता चलूँ कि ये जो सीन सारा हुआ है, जिसके अंदर डेस्मंड वापस आया है और उसने सारा कुछ देखा है, जुपिटर से बात किया है, ये जो बंदा था इसका नाम था जुपिटर। अब नॉवल के अंदर डेस्मंड ये सब कुछ नहीं देखता, एजियो ही देखता है, और एजियो की मेमोरी को देखते हुए डेस्मंड को ये सारा कुछ पता चलता है। तो दीज वर द रेवलेशंस। फिलहाल अभी डेस्मंड की स्टोरी एंड नहीं हुई, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं। अभी मजीद आगे डेस्मंड की स्टोरी जानी है। असैसिन्स लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, उनको जगह मिल चुकी है। अब देखते हैं मजीद आगे वो क्या करते हैं। फिलहाल एजियो की स्टोरी खत्म हो चुकी है। एजियो यहाँ पर अपनी चीज़ें वगैरह उतार के सारा कुछ करके ख़त्म करके जा चुका है। वो कहता है भाई मैंने 3 डेकेड तक इसको मैंने कंटिन्यू रखा है, अपने बाप भाइयों के बदला ले लिया, उसके अलावा लोगों के लिए मदद के लिए सब कुछ कर लिया, असैसिन ब्रदर के लिए किया। अब बस अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। सो उसने उस सब को ख़त्म किया, अपनी तलवार अपने ब्लेड सब कुछ वहाँ उतार के रखता है, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है सोफिया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके मुझे बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि मेरे हर एपिसोड की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।